चल गया I think. ये ये Yes, yes, yes. What चल ठीक happened, Ashwin? है. We were copyrighted. The copyright police came for us. Yes. We also had to take a training on what are the best practices to view third party content in YouTube. Yes. Wow. Now we know better. I will stick to Do we? Anton Petrov. Exactly. Anton's a good Anton guy. Petrov is a great guy. A great guy. Doesn't copyright people. Yeah. Such a good guy. Oh, Project Hail Mary. Is this the book? Oh, this is a study. What this study was about. Hmm. Hmm. This strange event wobbled space-time. Astronomy is human cons. Oh, this one. I watched this one. Galaxy show signs of stars. Want to see the bumblebees? The bumblebees. Bees. बम्बलबीज वाला कल देख रहा था मजा कम आया था Okay. So time is an illusion. देखा है. Math test. According to math, we are all alone. That's. You wanna watch this? what Math suggests we may be the only intelligent life in the universe. cool why not I won't do full screen. It's here. Hmm? What? क्या? एक मिनट रुक जरा. हाँ? yeah Okay. कुछ तो I don't know, बोल रहा है somehow अटक on रहा है YouTube बहुत I अंकल यस became known as the थोड़ा It's उसको वो Never करना Aliens. क्वालिटी कम Already come. Already तो least फ्लिकर है. हो रहा है बहुत अरे तो इतना ही चलो ठीक है कोई बात नहीं Anton. And that's because how on I don't know, somehow on YouTube I became known as the It's Never Aliens Anton. And that's because there's been a lot of videos I made where I basically tried to explain that some of the claims made in the media are pretty much never aliens. And it's a title I started to wear kind of proudly. And not because I enjoy raining on people's parades and enjoy being a contrarian, or because I hope that extraterrestrial intelligence doesn't exist, but because pretty much every single time for the past few decades that I started researching this, I'm forced to look at the cold, hard statistical truth. And the statistical truth in this case is a serious buzzkill when it comes to trying to find anything, any intelligence, anywhere in the universe. And that's of course despite the fact of how extremely large the universe is. In this case, we're talking about the universe containing over 2 trillion galaxies, with each of these galaxies containing a few trillion planets. As a matter of fact, our own Milky Way possibly contains anywhere between 100 to 400 billion stars, with a few planets around each of these stars. And so here, even if worlds supporting life are somewhat rare in the universe, just the sheer numbers suggest that the entire universe should be teeming with intelligence, with at least some of this intelligence trying to communicate and trying to send out various signals. Mostly because, as we know from the evolution, normally any life typically starts expanding until it fills all of the available niches. And this massive conflict between observations and predictions is of course what we refer to as the Fermi paradox. The paradox between a massive amount of पता तेरे को फर्मी पैराडॉक्स क्या होता है?
क्या होता है? फर्मी पैराडॉक्स ये है कि हम लोग that suggests that we are not alone. Stars in याद the नहीं है मेरे को relatively एक्चुअली हम्म old बताया। universe, and the fact that we don't really see any evidence in the relatively Fermi paradox. The paradox between the massive amount of stars in the relatively old universe, and the fact that we don't really see any evidence for anything anywhere. Just an echoing cosmic silence, at least in terms of scientific evidence and scientific facts. Forget about all those press releases and all of this nonsense in regards to comets being spaceships. And so here the question is, why the silence? And so, hello wonderful person, this is Anton. Today we're going to talk about some of the recent and somewhat intriguing studies, including studies from a few years back, that try to explore this idea from a more mathematical and statistical perspective, and provide us with a somewhat interesting but also somewhat क्या disappointing बोला अभी? conclusion. And I think this conclusion मैं is वही probably देख रहा pretty हूँ मेरे clear को भी। from the title. बेसिकली उसने ये बोला कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वीडियो में कि साइलेंट क्यों है यूनिवर्स, हमें कोई सिग्नल क्यों नहीं आया जो हम इतना भेज रहे हैं। हम्म। हाँ, तो तो वो इतनी शेयर वॉल्यूम है, इतना मैसिव है, तो हाँ बहुत सारी लाइफ फोन मतलब नहीं मांगती। वही वो ट्रिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और सब में कुछ ट्रिलियन प्लैनेट्स हैं। तो हम्म, इतनी इतनी भीड़ में एक सिग्नल नहीं आया अपने पे। तो ये कह रहा था वो एक्सप्लोर करे कि क्यों। Of this video. And so today we're going to take a look हम्म, at critical scientific arguments that tell us how rare intelligence truly is, and that focus on some of the most rigorous mathematical analysis, reinforcing the idea that we might be alone, for reasons we obviously don't know. But let's start with a bit of a history and some of the explanations from a few decades back, and how scientists previously tried to explain this Fermi paradox by just looking at what we know about our own planet. And while a lot of this thinking starts with Brendan Carter, an Australian theoretical physicist who mostly specialized in exploring properties of black holes, but who also back in 1983 explored the idea behind the formation of complex life on the planet. And here he pointed out a remarkable, baffling coincidence. It took approximately 4.5 billion years for the intelligence to evolve on Earth. And here this is a coincidence because this is dangerously close to the total remaining habitable lifetime for our planet, and even for our sun, which will start transitioning into its very dangerous stage in the next few billions of years. But even here on Earth, we don't actually expect it to stay habitable for longer than 1 billion years from today. And so here Brandon Carter argued that this coincidence suggests that the typical time required for evolution to produce intelligence is actually much, much longer. Very likely. तो वो बोल रहा है कि fuck, मैं बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो गया। क्या क्या बोला इसने अभी? मैं बोला कि मतलब होता है ना कि अर्थ में जब इंटेलिजेंस आई थी तो 4.5 बिलियन ईयर्स लगे थे, तो जो अर्थ का हाँ पूरा हाँ टाइम है ना हैबिटेबल, वो शायद 1 ही बिलियन है। तो बहुत सारा टाइम लगता है इंटेलिजेंस को, मतलब होता है ना, वापस तो उस पनप लेवल पे पहुंचने के लिए। पनपने पनपने में। हाँ हाँ, पनपने में। वही तो वो बोल रहा है कि वो ऑलमोस्ट उतना ही टाइम हमारे पास अभी बचा है। और जितना जितना हमने हम्म, जितना लगा हम्म, उतना टाइम क्या कहते हैं बनने में। हाँ आएगा बता दो। हम्म हम्म, Way तो longer than the lifespan of a typical star. And so his question was, मैं एक बार ही वो चेक कर लेता हूँ भाई, फिर से तो नहीं हो गया, पता चला हम देख ही रहे हैं। नहीं नहीं हाँ, कि हैंड साले होना अभी चाहिए। वार्निंग दी थी तेरे को। कहाँ है एंटन थैंक यू भाई? एंटोन। why did we make it on time? And so this is where Carter came up with this idea known as the anthropic principle. Simply put, we observe the universe the way it is because if it was different, we would not be around to see it. Or basically, the universe appears just right for life, not by chance alone, but possibly because only in such a universe could we even exist. Now, हाँ समझ आया कि मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो हमें दिखता ही नहीं, या हम नहीं होते। ऐसा नहीं होता तो हम नहीं होते तो दिखता भी he नहीं। was mostly ये क्या concerned बात with हुई? the properties of the universe, हम्म, such as, for example, various cosmological constants, but in some of the recent studies, this is also applied to the idea behind intelligence on the planet.
And specifically here, the idea that we basically won the lottery. Even if the odds for the intelligence are very low, for example, 1 in 100 trillion, we must by definition be on the single planet that won that cosmic lottery. Which of Hmm. course puts everything in a completely different perspective, basically making us the privileged ones in the entire universe. But specifically, Hmm. this argument also rests on the idea behind these so-called hard steps or evolutionary bottlenecks that sometimes are also referred to as the great filters क्या गया? or evolutionary bottlenecks that sometimes are also referred to as the great filters. Basically, these unique one-off adaptations that took surprisingly long to evolve, which do reinforce the idea that our existence may be incredibly improbable. Not impossible, just unlikely. And here we Unlikely. do have quite a lot of very specific steps or very specific achievements for the life itself. Most of this is summarized in this picture. First of all, we have the origin of life itself, the idea referred to as abiogenesis. This very likely started pretty quickly on a planet, but even today we're not entirely certain how. And for Earth, as far as we know, this only happened once. Obviously, we have no idea if it ever happened anywhere else. Then we have the origin of photosynthesis, the process that generates oxygen, which was also very likely a one-off event and possibly happened approximately 2.5 billion years ago. We have the appearance of complex cells or eukaryotic cells, the cells that you and I are made out of, which also seems to have happened once, and that surprisingly we kind of do understand now based on some of the recent discoveries from the last decade. If you'd like to find out more about this, check out some of the previous videos on the incredible discoveries from the Archaea kingdom that should be somewhere in the description below. But there are some other limitations too: sexual reproduction, evolution of complex life or complex animals, and of Hmm. course the last one being the human level intelligence itself. And so today most research and most studies agree that each of these individual steps was possibly extremely unlikely. And even if we assume that the chance for one of these steps to happen was only like 1%, if you were to stack all of these steps together, it would suggest that the probability of complex, intelligent life to emerge would be incredibly small, possibly 1 in 100 trillion if we're being very generous. But even here, the actual value is probably much smaller. With this recent paper even providing us with a kind of a window for human habitability, which even for our planet is surprisingly short. And as you can see, in the near future, no complex life is going to be able to survive. This is actually less than 500 million years in the future. And though the initial work by Brandon Carter ये was quite अभी insightful, अभी it still डाउनलोड lacked करके खेलेंगे अभी डाउनलोड करके years in the future. And though the initial work by Brandon Carter was quite insightful, it still lacked a more rigorous approach and more statistical analysis that would be required to determine the exact likelihoods. But in 2021, a team of researchers including Andrew Snyder-Beatty published a study that provided a rigorous mathematical framework using a Bayesian model to finally quantify just how rare intelligence is based on the timing of each of these evolutionary events on the planet. Or just to rephrase this, they managed to mathematically quantify each of these steps, essentially giving us an actual probability by trying to approach this from a purely mathematical perspective. And so here this model generalized some of these critical biological steps such as abiogenesis, sexual reproduction, and intelligence, and then analyze the time it took for these transitions to occur on our own Hmm. planet. And while one of the more important discoveries from मतलब इसमें ये कह रहा है कि सब मतलब बहुत सारी चीजें होनी थी और सब इक्वली अनलाइकली थे। क्या बोल रहा है हम्म क्या? हम्म, हेलो। फिर सब इक्वली अनलाइकली थे हेलो हाँ, हेलो हेलो, हाँ हेलो तो हेलो 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 हम्म हेलो 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 हेलो, अरियाज, हेलो। जब हाँ बोलो बोलो हाँ आ रही है आवाज तो वही कह रहा था कि सब इक्वली अनलाइकली थे और फिर भी हो गए। तो इस और इन्होंने अभी पहले उसने किया था ब्रेंडन कार्टर ने, आई थिंक 80s 90s में। तो उस टाइम रिगरसली नहीं किया था। अभी जो नया वाला किया उनने बेसियन मॉडल लगा के रिगरसली बहुत सारे मतलब वो लिए वेरिएबल्स लिए, which suggests that intelligence life is extremely rare, improbable even, कि मतलब कि होना नहीं चाहिए पर हो गया। इंटरेस्टिंग हम्म। हाँ
सबसे कूल चीज पता है क्या है, मतलब ऐसे हम्म, होता है ना कि 100 ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स में एक हम्म, प्लैनेट के अंदर पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। हम्म, हम्म, और मतलब होता है ना कि कितना बिल्कुल होता है, इतने सारे में हम्म, से इतना एक है, लेकिन फिर उस एक हम्म, प्लैनेट के अंदर हम्म, 100 ट्रिलियन तरीकों से हम्म, पॉसिबिलिटी वो मैनिफेस्ट भी हो रही है। होता है ना, वही तो वो इतनी वही वही। अबंडेंस से एक ही जगह पे हम्म, हो रही है ना, वो कितना ब्यूटीफुल हम्म, पे होता है ना, तो वो इसलिए नहीं लगती। बिकॉज हम मतलब होता है ना, ये दस हम्म, बिलियन तो अपने जैसे लोग ही देखते हम्म, हैं, यूनिवर्स हम मिला दे तो ट्रिलियंस ऑफ तरीके के होता है ना, लाइफ अपने आप को हम्म, मैनिफेस्ट कर रही है, बैक्टीरिया ये सब वो सब हम्म, कहीं से ना मूवमेंट है। और इधर से हम्म, देखो तो इधर से ऐसा है, हमारे सेंटियंस में भी बिलियंस ऑफ लोग मिल जाते हैं हमें यहाँ पे। हम्म, तो कहीं ना कहीं इसलिए शायद अप्रिशिएट नहीं करते कि कितना रेयर है जो हम्म, यहाँ पे हो हम्म, रहा है। true। आप क्या कह रहे थे? ये एक मिनट, सॉरी। हाँ, नो वरीज। नहीं नहीं, मैं बस चेक कर रहा हूँ कुछ। हाँ ठीक है, चल रहा है। I was just checking man, फिर से बंद हो गया तो। हम्म, तो हाँ, ये from ब्यूटीफुल this है analysis. काफी कि इतना सारा एक ही जगह पे हो गया। नो बट लाइक, आई थिंक व्हाट ही मींस बाय इंटेलिजेंट लाइफ इज हियर इन दिस वन इज कि कौन सिग्नल भेज सकता है, मतलब वो बाहर भी देख रहा है अपने प्लेनेट के बाहर। कि हम तो बहुत सालों बाद ये हुआ ना कि अच्छा करेक्ट, हाँ। ऊपर क्या है, टेलीस्कोप लगा के देखते हैं कि क्या चल रहा है। नहीं, हमारे हम्म, पास जब से कैपेसिटी है तब से ही है, मतलब होता है ना कि हम्म, हम हम्म, अपने बाहर की लिमिट तो खुद तो फेंक ही रहे हैं। मतलब होता है ना हम्म, कि हजारों साल पहले भी एस्ट्रोलॉजी और जो होता है ना कि स्टार्स मून्स इनको चार्ट करने की जो कोशिश होती थी, वो हम्म, अपने लेवल पे चल रही थी। टेक इस जब आई कि होता है ना कि तुम इतनी बड़ी वेव भेज सको, जैसे ही हम्म, टेक एडवांस हुई उतनी उतनी उस समय ही मतलब ह्यूमैनिटी ने भेज दिया था वो सिग्नल, हम्म, एक रडार लगा के टिंग 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 टिंग, हेलो हेलो हेलो। तो हम्म। और उससे पहले भी मतलब हेलो। चाहे वो फिर वो सन गॉड मून गॉड बना के कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे। हम्म, हेलो, हम्म, क्या आवाज? यार तेरा कट रहा है, तेरा कनेक्शन कट रहा है उस साइड से। ऑल राइट, गिव मी अ सेक, लेट मी हम्म, चेक, बैक इन अ सेक। हम्म, माइंड ब्लोइंग शिट मैन। So yeah, there was an old saying that either we are alone in this दैट universe or we are not. There, there is an old saying that either we are alone in this universe or not, and both of those possibilities are equally scary. फेयर, आइदर वी आर alone in the universe or we are not। अभी और बोलेगा ना इंसान। Mm-hmm. एक मिनट। हाँ, on and on. Believe in you. Analysis was not the actual number for each of the steps, but the fact that when using this logarithmic approach, and when admitting that we have no prior information about how easy or how hard each of these steps should be, in pretty much most cases, these calculations showed a kind of a asymmetry. Or just to rephrase this, here we can confidently rule out that each of these transitions was extremely fast, because here the mathematical approach suggests that these transitions should be pretty slow and take a pretty long time to achieve. For example, if a step took 1 billion years in the fossil record,
This model definitively rules out that this step should take a much shorter time somewhere else. So essentially, we shouldn't really expect photosynthesis to appear much faster if it took that long on our own planet. But the other discovery here was even more chilling, or I क्या guess to some क्या 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 बोला भाई, तू फिर बता. कुछ नहीं because बोला, here the मैं तो mathematical approach शांत हूँ. suggests that these नहीं नहीं, transitions I'm talking should be about pretty slow and take a pretty long time. Mathematical approach rule out how hard approach will occur on our own planet. And then analyze the time it took for these transitions sexual. So here this model generalized some of these critical biological steps such as abiogenesis, sexual reproduction, and intelligence, and then analyze the time it took for these transitions to occur on our own planet. And while one of the more important discoveries from this analysis was not the actual number for each of the steps, but the fact that when using this logarithmic approach, and when admitting that we have no prior information about how easy or how hard each of these steps should be, in pretty much most cases, these calculations showed a kind of a asymmetry. Or just to rephrase this, here we can confidently rule out that each of these transitions was extremely fast. Because here the mathematical approach suggests that these transitions should be pretty slow and take a pretty long time to achieve. For example, if a step took 1 billion years in the fossil record, this model definitively rules out that this step should take a much shorter time somewhere else. So essentially, we shouldn't really expect photosynthesis to appear much faster if it took that long on our own planet. But the other discovery here was even more chilling, or I guess to some extent more confusing. Here ये the model समझ आया तेरे को फोटोसिंथेसिस का जो उसने बोला. समझाओ. step should नहीं take नहीं, a much एक shorter मिनट time समझा. somewhere else. So essentially, we shouldn't really expect photosynthesis to appear much faster if it took that long on our own planet. But the other discovery here to appear take 1 billion should be pretty slow and take a pretty long time to achieve. For example, if a step took 1 billion years in the fossil record, this model definitively rules out that this step should take a much shorter time somewhere else. So essentially, we shouldn't really expect photosynthesis to appear much. अच्छा, क्या बोला, कि क्या बोला? अगर हमारे यहाँ पे इतना टाइम लगा है उस स्टेप को आने में, तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कहीं और वो स्टेप जल्दी हो जाएगा. तो वो मतलब वो मिनिमम टाइम तो होएगा ही. हम्म. समझा. हम्म. क्योंकि वो भी बहुत सारी फिजिकल और क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल पे प्रोसेसेस चल रहे हैं जिनको उतना टाइम लगेगा वो कंप्यूट होने में. Much faster if it took that long on our own planet. But the other discovery here was even more chilling, or I guess to some extent more confusing. Here the model discovered that the observed transition times are entirely consistent with the expectation that these transitions should take extremely long time, usually exceeding Earth's lifetime. So basically for each of these steps, we technically expect them to take much longer. And if you're asking why, well, it's because of the observation selection effects from the previously discussed anthropic principle. Even if one evolutionary step is extremely rare, it can only happen on planets that got super lucky with this event actually happening there. Okay, it might sound kind of confusing, but in essence, the conclusion here is that the expected evolutionary transition resulting in intelligent life should actually exceed the entire lifetime of planet Earth and even the Sun. And in this तो अब मेरे को थोड़ा समझ में आ गया कि मतलब वो उसने एक्सपेरिमेंट ये किया ये देखने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर स्टेप्स हैं कि अच्छा ये इतना इतना टेम्परेचर होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस होना चाहिए और बायोजेनेसिस शुरू हो जाना चाहिए इतने टाइम पे, तो उनको अलग अलग वेरिएबल लिया और ये देखा कि वो उनका क्या वो है, क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी है आने की. ठीक है. एंड दैट प्रोबेबिलिटी और दैट की मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, कितना टाइम लगेगा उन सारे स्टेप्स को होने में टू इवेंचुअली लीड टू इंटेलिजेंस लाइफ. और जो टोटल इंटेलिजेंट लाइफ का विदाउट अर्थ से कंपेयर किए तुम जो वो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, दैट सजेस्ट दैट इंटेलिजेंट लाइफ विल टेक मोर टाइम देन द लाइफ साइकिल ऑफ अर्थ. मतलब टेक्निकली अगर तुम सिर्फ मतलब अर्थ के बारे में भूल जाओ, तुम जब तक यूनिवर्स में देखो. कहीं और लाइफ आएगी तब तक होता है ना, ह्यूमैनिटी एज अ सिविलाइजेशन, अर्थ एज अ प्लैनेट ही खत्म हो जाएगा. हाँ, बट लाइक द जब थिंग तक इज कि आएगी ही नहीं. इट्स सो अनलाइकली कि हमें इतनी जल्दी लाइफ मिल गई, क्योंकि जो एक्चुअल टाइमिंग ऑफ लाइफ टू जनरेट इज द
दी इज मोर देन द लाइफ साइकिल ऑफ अर्थ, कि मतलब अर्थ का 4-5 बिलियन का लाइफ है, अर्थ खत्म हो हम्म, जाएगी उस वो इंटेलिजेंट लाइफ डेवलप होने से पहले, हो जानी चाहिए थी, हम्म, अनलाइकली था बट हम्म, आ गए हम लोग। मतलब हमने बहुत सारी लॉटरी एक साथ लगी हमारी, बहुत सारी, और फिर हम पहुंचे। हम्म, He succeeded by several times, and especially in systems that would be different from planet Earth. But because this was based on mathematical models, they ran this several times. And as they ran these models for multiple transitions, for a three-step model, over 99% of parameters suggested less than 1% chance of intelligent life occurring within Earth's habitable lifetime. Or once again, there is less than 1% chance that intelligent life should have evolved here. And so the observed history of life on Earth provides powerful mathematical evidence that becoming an intelligent civilization is ultra rare, which kind of corroborates Brandon Carter's initial argument, and once again suggests that the intelligent life in the entire universe seems to be exceptionally rare or possibly only exists in one place, right here. But obviously not everybody agrees with this, and some scientists have tried to challenge this as well. For example, one of the recent models proposed by the researchers from the Penn State University tries to see it slightly differently. Instead of viewing the timeline as a series of lucky breaks and basically just winning the lottery, they suggest that humanity's evolution was a natural consequence of Earth's evolving conditions. And the core argument in this recent study is that life doesn't just need time, it also needs the planet itself to become permissive. Or basically here the planet has to have a kind of a window of habitability. A key example here would be oxygen. Complex animal life requires high levels of atmospheric oxygen, and so the oxygenation of Earth, driven by earlier microbial life, took a long time, but once the condition was met, the window of opportunity for complex life opened naturally. And so in this case, researchers argue that we shouldn't base predictions on the lifespan of the sun, but on the geological timescale, the time it takes for the atmosphere and the landscape to change. And so according to their study, humans evolved just on time, specifically when the conditions were perfect for such evolution to happen. And so for the scientists behind this study, if evolution unfolds at a planetary pace, here we suddenly have a dramatic increase in probability that life similar to ours possibly exists elsewhere. Because in this case, we're no longer just talking about some kind of a mathematical probability or chance, we're talking about some major steps that happen because of the outcomes of planetary maturation, or basically geological evolution, that can also happen on other planets out there. And मस्त आ रही है मस्त। नहीं नहीं, ऐसे वो आवाज, वो ड्रिल की आवाज आ रही थी क्या पहले? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो नीचे ड्रिल चला रहे हैं। अह, हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो इसने वो ये जो कह रहा जो था। जो इसका जो अपोजिंग लाइक एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने बोला कि एक बार ये ऑक्सीजन बन गया तो उसके बाद इट्स नो लॉन्गर अ लॉटरी। तुम्हारा मॉडल गलत है क्योंकि तुम सबको एज अ रैंडम इवेंट ले रहे हो, पर एक बार ये ऑक्सीजन बन गया उसके बाद तो इनएविटेबल है इंटेलिजेंट। ये बोला दूसरा अपोजिंग एक्सपेरिमेंट में। ओके, ऑक्सीजन, हम्म। सिर्फ ऑक्सीजन होगा तो सब हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीजनेशन में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। वो एक बार ही इन्वायरमेंट सही हो गया तो उसके बाद फिर इंटेलिजेंट लाइफ कम्स आउट इन नो टाइम, इज testing व्हाट this दे आर idea should आर्ग्यूइंग। not be very difficult. By searching atmospheres of exoplanets and by discovering biosignatures such as oxygen, we can then confirm if these unique evolutionary steps could happen elsewhere, or if our planet is indeed unique in some way. And so in essence here we have two somewhat competing, but somewhat reasonable explanations and propositions for why intelligent life could be super rare, but also for how intelligent life could maybe exist elsewhere in just the right planetary conditions. But this entire cosmic mystery, the Fermi paradox and the Great Filter, is perhaps the most important scientific question we face,
mostly because the answer directly informs us of humanity's future risks. For example, if life is actually very common and if alien life technically exists everywhere, we are then faced with the realization that somewhere along the path of advancement, from simple life to extremely intelligent life, probably because of some kind of explosive technological advancement, there seems to be another filter, a giant hurdle. Something that possibly stops the life from advancing further, which is why we're not seeing any intelligent life out there trying to communicate, at least as of 2025. And so, for example, if this great filter lies in our past, as suggested by the 2021 study, or basically implying that abiogenesis and other steps are just incredibly hard to reach, then we are indeed fantastically rare, but at the same time, our future might be safe. We don't really have much to worry about for at least the next 200 million years. We won the cosmic lottery, and the universe is quiet because, well, nobody else did. There seems to be, at least for now, just one winner. But if this great filter is ahead of us, meaning that these early steps were easy and a lot of planets should have achieved these steps, which is what the counter-argument from the 2025 paper proposes, then our future is indeed bleak. It would suggest that the universe is silent because advanced civilizations that possibly evolved in the past also face some kind of an existential hurdle, such as, for example, a technological self-destruction, with one obvious example being some kind of an uncontrolled artificial intelligence that evolves and destroys everyone. Or maybe some kind of an ecological collapse that prevents a civilization from becoming too complex. And this is why, contrary to what you might think, finding evidence of extraterrestrial intelligence somewhere out there is possibly bad news. Because in this case, a signal would imply that these extremely difficult biological steps in our past were surprisingly easy to overcome. But there might be still some kind of a massive filter waiting for us in the future. But at least for now, until we actually find something, the most likely conclusion is that becoming intelligent is exceptionally, wonderfully, statistically improbable. And though this great silence is still profoundly challenging to explain, it also helps us to explore the possibility. तो ये बेसिकली कह रहा है कि जो जो ऑपोजिंग रिसर्चर्स ने आर्ग्यू किया था कि बेसिकली कि अगर एक बारी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मेनली बट लाइक अदर बायोमार्कर्स आ गए हैं उसके बाद लाइफ बहुत आसान हो जाती है बट फिर भी गैलेक्सी इतनी साइलेंट इस वजह से है क्योंकि देयर मे बी अ जायंट हर्डल दैट ऑल इंटेलिजेंट लाइफ हैज टू क्रॉस टू eventually communicate with the other intelligent life, which none of them have been able to till now. And therefore, there may be a giant hurdle for us also in the future. मुझे लगता है हमारे उसमें ये हर्डल निकाल लिया है हमने। ऐसे में अभी बैठे-बैठे मुझे ऐसे होता है ना जैसे कि होता है ना कि वो इज़्म होता है ना लाइक ये कास्टिज़्म, नेशनलिज़्म, रेसिज़्म तो ऐसे स्पीशीज़्म हुआ थोड़ी देर के लिए कि बहनचोद मतलब होता है ना कि मेरी स्पीशीज़ जो है ना, मैं उस स्पीशीज़ से हूँ, उससे इंटेलिजेंट कोई स्पीशी एक्जिस्टेंस में ही नहीं है नोन यूनिवर्स में। मतलब होता है ना कि मैं जिस फ्रेटर्निटी से आ रहा हूँ, उसके लेवल की कॉन्शियसनेस किसी लिविंग बीइंग में है ही नहीं बिलियंस ऑफ बीइंग्स के अराउंड ना होता है ना कि मतलब इट्स लाइक होता है ना कि एक्सपोनेंशियल डिफरेंस है मतलब होता है ना सेकंड और फर्स्ट में तो उधर से आ रहा हूँ और मतलब फिर डरते क्यों है मतलब होता है ना कि इस यूनिवर्स में जो भी नॉन यूनिवर्स है उसमें जो मैं मेरे को जो बेयर मिनिमम मिला हुआ है मतलब होता है ना एक गरीब से लेके सबसे अमीर से अमीर को लेके सबको सबको बेस लाइन टॉप टियर स्पेक्स मिले हैं भाई मतलब इससे ज्यादा कोई हाई स्पेक कोई है ही नहीं कोई है ही नहीं हाई स्पेक मतलब नॉन यूनिवर्स में अभी तक सो फार नहीं तो मतलब बट होता है ना प्रैक्टिकल नहीं एक्सपीरियंस से एक भी डार्क फॉरेस्ट थियरी है जिसके ऊपर वो शिंजी लियू की जो बुक थी थ्री बॉडी प्रॉब्लम का जो सेकंड पार्ट था उसका नाम ही डार्क फॉरेस्ट है तो डार्क फॉरेस्ट थ्योरी ये है कि इंटेलिजेंट लाइफ इज नॉट कम्युनिकेटिंग लाइक नॉट सेंडिंग सिग्नल्स आउट बिकॉज दे नो दैट वंस दे सेंड सिग्नल्स आउट तो जो दूसरी वाली जो तबाह होने वाली होती है सिविलाइजेशन वो आके रिसोर्स हड़पने की कोशिश करती है तो इसीलिए वो चुपचाप बैठे सारे कि जब जब दिक्कत आएगी जिन्होंने रिसीव किया हाँ सिग्नल उनको दिक्कत आई वहां पे हाँ ये उनका एपोकलिप्स इवेंट माइग्रेशन हुआ हाँ हाँ तो हाँ वो ये भाग लोग के यूएस इधर आ यूएस क्यों जाएंगे भागते हैं भाई माइग्रेशन की इसीलिए तो होता है कि अरे वहां पे बढ़िया पैसे मिलेंगे यहाँ पे हाँ कम मिल रहे हाँ हैं चलो चलो वहां से उड़ा लेंगे ना
पता ही तो नहीं वो होता लोगों डार्क को यूएस फॉरेस्ट था थ्योरी तो है। भाई। डार्क तो वो डार्क फॉरेस्ट। फॉरेस्ट थ्योरी है। इधर ये सजेस्ट कर रहा है कि जायंट हर्डल भी हो सकता है, कि एक कोई हर्डल है जो क्रॉस करना है, या ये भी हो हम्म सकता है कि इवेंचुअली इंटेलिजेंट लाइफ बिफोर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स लीड्स टू हम्म अपोकलिप्स इन सम वे और अदर, कि ये आई बना लेते हैं या एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इसलिए उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो किससे कम्युनिकेट करें। मतलब आई फील लाइक होता है ना, ह्यूमैनिटी इज केपेबल ऑफ लाइक होता है ना हम्म, डूइंग कैटास्ट्रोफीज। होता है हम्म, ना कि 1 बिलियन 2 बिलियन लोग मार दिए, मतलब होता है ना हम्म, वर्स्ट केस हम्म, सिनेरियो। हम्म, बट ह्यूमैनिटी हैज लाइक होता है ना बढ़िया एक रीइंफोर्सिंग लूप है। और हम्म, मतलब होता है ना कि इन द एंड अभी तक जितनी भी प्रथा चले हैं या जैसा भी हम्म, हिस्ट्री रहा है ना, जैसा रिफॉर्म भी चल रहे हैं, उस हिसाब हम्म, से ह्यूमैनिटी हैव ऑलवेज मेड प्रोग्रेस। और होता है ना बैक ट्रैक्ड ऑन डिसीजंस आल्सो। लाइक हम्म, होता है ना कि हम्म, इट हैज ऑलवेज बीन ऑन अ पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी। सो हम्म, ये एनहिलेशन एपोकलिप्स आई ऑलवेज फील वेरी अनलाइकली। लाइक हम्म, वो एज केस सिनेरियो आई फील की होता है ना कि एक मे बी लाइक होता है ना कैटास्ट्रोफी, लाइक होता है ना कि हाँ, गुड मेरे को परसेंटेज भी ऑफ ह्यूमंस माइट गेट वही कह डाई, रहा वो भी। बट होता है ना, बट हाँ तो दे मतलब वुड नेवर मर बी गए तो एन फिर उसके बाद, एक्सटिंक्शन लेवल। हाँ तो हाँ वो भी नहीं कह रहा कि एक्सटेंशन हो रहा है। अपोकलिप्स इतना हो रहा है कि तुम्हें फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। जो वो अभी तेरा अपोकलिप्स हो गया तो तू ये थोड़ा ना सोचेगा कि मैं जाके अर्थ से बात करता हूँ एक बारी। आई डाउट, मतलब होता है ना अभी आई ऑल्सो आई डाउट होता है ना कि दिस नहीं नहीं, तो उसमें जीरो ये से नहीं है कि स्टार्ट करने वाला सेक्शन। एक्सटेंशन, मतलब अब तेरे पास लोग ही नहीं बचे, तेरे पास वो ही नहीं बचे जो चला सकते, समझ की तेरा कुछ मशीन्स वगैरह हैं जिससे तू कम्युनिकेट करता है ओवर गैलेक्सीज और व्हाटएवर, तो वो जो चलाते हम्म हैं वो लोग ही मर गए। तो फिर तू कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो ही इज नॉट सेइंग कि अपोकलिप्स इन द सेंस कि सब लोग मर जाएंगे। अपोकलिप्स हम्म इन द सेंस कि वो जो जो भी उनकी डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो हिंडर हो जाती है उस ग्रेट हर्डल की वजह से या जायंट हर्डल की वजह से, इन सम फॉर्म और अदर, कि उनका या तो टेक्नोलॉजी बर्बाद हो गया, या लोग भूल गए कि कैसे चलाते हैं। टेक्नोलॉजी है पर लोग को पता नहीं कैसे चलाते हैं। द सिमुलेशन है। हाँ तो इनमें से बहुत सारी लाइक वो हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज। that our own existence is सिमुलेशन है just an सिमुलेशन। astronomical fluke. Which also means that we probably should take our future survival and the unique conditions on our planet maybe just a little bit more seriously. Because as far as we can tell, at least at the moment, we are likely all there is out there. But because this is such a fascinating concept and because there are so many things I want to explore and discuss, we'll definitely come back and discuss this more in some of the future videos. Until then, check out the playlist on the Fermi Paradox in the ये description वो है below. Thank you एंटोन, for अब watching, वो है। subscribe, come back tomorrow यार to एक learn लाइक something देते else. पहले से। Support this channel on Patreon where you can find additional videos क्या without लेते any हैं? लाइक लाइक लाइक? लाइक, हाँ। लाइक किया ना। अरे अरे वाह, अरे वाह, वेरी नाइस। वी लाइक आई यू एम बैक। नॉट आई एम नॉट गोइंग टू वरी अबाउट डेंजरस एलियन इंटेलिजेंस, आई एम until I'm done worrying about dangerous human stupidity. Plot twist: Anton is an alien and he's trying to hide the truth. आर वी फुली ये अलोन? वाला है, ये वाला देख। Are we fully alone? I doubt it. Are we functionally alone? That's quite possible. ये Which the most believable answer to me is that we are among the first in our आई लाइक observable दिस। area. Everyone else is somewhere in the same technological ballpark as us, and none of them are loud enough for others to hear. Makes sense. ट्रू टूरू टूरू लव। Let's hope that there's intelligent life somewhere out there, because there's bugger all down here on Earth. ये तो मस्त ऐसे इफेक्ट बेस्ड कमेंट हैं, कुछ कमेंट्स अच्छे हैं, कुछ बस होता है ना Hmm, एक इफेक्ट क्रिएट करने hmm, के लिए है बस। hmm. Oh, oh, that's I didn't know that. Tree is rarer than diamond on cosmic level. इंटरेस्टिंग, वाओ। हाँ, ये एक पर अच्छे डायमंड तो तरीके बन ही से जाता है।
डायमंड तो बन ही हाँ जाता कहीं ना कहीं। हाँ, चार वो लोग पांच कहते हैं ना कि हीरे के कार्बन को एस्ट्रॉइड्स वो, में हाँ, हाँ एस्ट्रॉइड्स में हीरे हैं। हाँ, नहीं वो तो इसीलिए है ना कि कार्बन को तुम वो करो, प्रेशराइज करो, तो इवेंचुअली वो तेरे को डायमंड बन ही जाएंगे। डिस्टेंस इज एब्सेंस द ऑफ फिल्टर। एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। डिस्टेंस इज द फिल्टर। हाँ ये वाला मैं बोल रहा था कोट। टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, आइदर वी आर अलोन इन द यूनिवर्स और वी आर नॉट, बोथ आर इक्वली टेरिफाइंग। आर्थर सी क्लार्क। यस। क्लार्क कैंट सुपरमैन यही था। नाइस नाउ शुड नाइस। वी डू अब द, हम क्या लिखने वाले? हाँ यस। ठीक है, आई जस्ट चेक व्हाट चल रहा है कि नहीं चल व्हाट वाज दिस, व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? एक बार इसका वो कर लेते हैं ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या था इसका? रहा। लाइक दिस इज कि हम बहुत ही ज्यादा अकेले हैं, स्टेटिस्टिकली हम्म हम बहुत ही ज्यादा अकेले हैं, और जिस तरीके से जो होता है ना, जो प्रोबेबिलिटी थी जिससे मतलब होता है ना कि लाइफ हम्म एग्जिस्ट कर सकती थी, हम्म वो बहुत ही रेयर है। और हमारे यहाँ पे अगर सही से टाइम फ्रेम में बन भी गया है, तो हम्म टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम लगता है वो सारी चीजें बनने में, होता है ना, हम्म नेचुरली, या होता है जो भी होता है ना बाई चांस, और उससे ज्यादा ही रहेगा। और यूनिवर्स हम्म के अंदर और क्या था, मतलब होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, एक बार ऑक्सीजन बन गया तो बन जाएगा। तो उसको हम्म उनसे बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, हम्म, मतलब है हाँ 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 हाँ। लवड़े। और क्या था, मतलब कि हम अकेले हो सकते हैं, हम जायंट अकेले हर्डल। नहीं भी हो सकते हैं, दोनों टेरिफाइंग है ना। हाँ जायंट हर्डल है कि मतलब कि जो आर्ग्यू अगेंस्ट कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन वाले लोग हैं वो ये हाँ कह रहे हैं हाँ। कि मोस्ट प्रोबेबली ऑक्सीजन बनने से इंटेलिजेंट लाइफ बन जाती है, बट द रीजन दे हैव नॉट communicated to us is because there is a giant hurdle to communication over this big uh, हाँ, ये तो बिग अब वो जायंट हर्डल अपोकलिप्स भी हो सकता है, अपोकलिप्टिक इवेंट भी हो सकता है, कुछ टेक्नोलॉजिकल क्या बोलते हैं लिमिटेशन भी हो सकती है, मतलब वो उसका पता नहीं क्यों है। बॉटल नेक। बट हाँ कोई बॉटल नेक है, मतलब इवोल्यूशनरी बॉटल नेक है कि नहीं कर सकते। अरे भाई, ये कन्वीनियंस के हिसाब से थ्योरी बनाई है इन लोगों ने कि उलूलुलू हो जाएगा, नहीं वो ऑक्सीजन मिलेगी, हो जाएगा। हमारे पास देखो, मतलब ट्रुथ इज हमारे कन्वीनियंस के पास हिसाब सिर्फ से नहीं ना, पर एक उन्होंने एक ही वर्किंग मॉडल मैथमेटिकली है। किया है। वही वो एक पॉइंट तो वही है कि मतलब हमारे पास डेटा पॉइंट ही एक ही है, मॉडल भी हाँ, एक ही एक ही वर्किंग होगा। मॉडल है। तो मतलब होता है ना कि जब थ्योरी बन रही है तो उधर से मॉडल एक ही निकलेगा अभी के लिए ना। नहीं ना, तो पर मॉडल तभी भी एक ही है, डेटा पॉइंट पर हमने कितने सारे तो अभी डिस्कस ही कर लिए ब्रो। कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, फिर डार्क फॉरेस्ट भी हो सकता है कि इनको पता है कि अभी ज्यादा चिल्लाए तो ये लोग आ जाएंगे हमला करने, तो चुपचाप बैठो। हम्म। तो वो भी हो सकता है, पर हमारा हम डेटा पॉइंट एक एक ही है। इस पे मुझे ये लगता है, इस पे मुझे ये भी लगता है कि जैसे ह्यूमंस होते हैं ना, तो हम्म मतलब होता है ना कि जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो हम जब भी हम्म एलियन इमेजिन करते हैं ना, तो हम हम्म जो सेंटियंस है ना, तो उस हम्म, सेंटियंस को हम अपनी सेंटियंस से ही करते हैं, कि होता है ना कि फिर हाँ हमारे वाले ही तरह का टेम्परामेंट होगा। होता है ना, cause हम्म जैसे कि वॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो एनिमल्स में नहीं है हम्म है ना, कि कोई भी एनिमल वॉर पे नहीं जाते, पर्सनल ग्रजेस होते हैं जानवरों के ना। बट ऐसा हम्म नहीं होता, मतलब कुत्तों को छोड़ दिया जाए जो होता है ना, वो भी ग्रुप हम्म में वो जो होता है, उसके हाँ अलावा किसी किसी उसमें ऐसे वॉर नहीं होती है। बट हम्म ह्यूमंस में होती है। और हम क्योंकि सेंटियंस में एक वॉर और ये जो होता है ना छीनना, और ये होता हम्म है ना कि ये वाला होता है ना कि हम्म, मार लेंगे काट देंगे टाइप वाला जो हाँ भी पर्सपेक्टिव होता है, तो हम वो पर्सपेक्टिव ही लेके जाते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि कि क्या वो जो है वो शायद मोर एनिमलिस्टिक हो, कि तू उनकी गांड हम्म मारेगा तो वो मार देंगे, अदरवाइज होता है ना वो जानवरों की तरह हम्म सूंघेंगे चिल करेंगे, वाइब अच्छी लगी तो सही है ना। क्योंकि हम नहीं तो ह्यूमंस एक ऐसे था हैं, तो ये हम भी, हमेशा वैसे ही सोचते हैं कि हाँ ओ ये भी ऐसे थ्योरी होगा। था कि वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट में बी अ ह्यूमन थिंग, हम्म तो इसीलिए उनको जरूरत ही नहीं है। तो वो हम्म उनको हम्म। मन ही नहीं है कि आके हाँ, तो ये लड़ाई हो करो, सकता है। हाँ, कि उनको कि वो इसलिए नहीं मिलना डिस्कवर तो, चाहते, बिकॉज होता है ना कि हम वर्दी नहीं है, दैट आई कैन हाँ फील। बट आई हम्म, डाउट कि होता है ना हमारा कुछ ले लेंगे, छीन लेंगे, झपट लेंगे, सिर्फ इंसानों का ये एक लो। हाँ ये हाँ होता है ना कि एक तरह से ये लिम्बो वाली कॉन्शियसनेस का एक साइड इफेक्ट हम्म होता है जो अभी हम्म इंसानों की है, धीरे धीरे असेंड हो रही है।
और ये हम्म, तभी तक चलेगा। तो आगे जाके जाके ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी असेंड होती है, तो इसके बियॉन्ड ही चली जाती है। हम्म, वॉर, ये वो ऐसा होता है ना, ये वाला कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हम्म, तो आई फील कि हाँ, तो तब शायद एलियन अगर होंगे तो वर्दी मानेंगे, वरना तो हम हेडेक ही है ना। हमसे हम्म, फायदा करके क्या है, इतना गेम खेलता है ह्यूमन हम्म, फालतू में, इसका ये कर दूंगा, इससे ये कर लूंगा, इसको ये हो जाएगा, ये दूंगा, ये मिलेगा, इतना मैथ्स लगाएगा। एलियन कह रहा है भग बहनचोद। ये नहीं करना। भूख लगी है, खाना खाता है मैं। काम से काम रखता है। हाँ, या फिर कुछ भी, मतलब काम से काम या मजे से मजे, कुछ भी मतलब। बट हम्म, हाँ, ये ऐसा इतनी गाड़ी तो नहीं कि इसका छीन लूंगा तो ही मिलेगा टाइप वाली मेंटालिटी मुझे लगता नहीं है कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन होगी तो उनकी भी होगी। और जानवरों में भी नहीं दिखती है, जो होते हैं ना इतने बिलियंस ऑफ हमें स्पेसिफिक हाँ। दिखते हैं, ये सिर्फ हम में दिखती है। इसकी हाँ। गांड मार लेता हूँ। हम्म, वही तो। सर्वाइवल के बियॉन्ड भी गांड मार देता हूँ। हम्म, तो इसलिए मुझे डार्क फॉरेस्ट थ्योरी थोड़ी वो लगती है कि होता है ना कि अरे कुछ हम्म, वो कि कोई डरेंगे, ये करेंगे, वो कर रहे हम्म, होंगे, ये सब दिमाग ह्यूमंस का चूतिया ज्यादा है। हाँ मतलब वो भी लाइक पूरी तरह वो भी नहीं कर सकते, क्या पता हुआ हाँ हो। बिल्कुल, मतलब हाँ, हाँ। डिनाई नहीं कर सकते। हाँ। बट हाँ मतलब उसको उतना वेटेज भी नहीं देना है, मतलब उतना वही है कि हम्म, एक बिलियन में से एक एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये हो हम्म, सकता है। बट हो सकता है कि वो थोड़े से मछली जैसे हो या बंदर जैसे हो, केला लेना हम्म, पसंद होने होता है ना, खाने के साथ उनका हम्म, बढ़िया हो, हम्म, नाचते नाचते हो, पेट वेट घुमाते हो। हम्म, कम्युनिकेट तो पूरी जिंदगी पूरा एग्जिस्टेंस ही एक दूसरे से कर रहा है ना। या कुछ भी ना हम्म, करते हो, सीधा टेलीपैथी में काम चल जा रहा हो, तो जब एक दूसरे के साथ चल रहे हो तो कैसे होगा। हम्म, तो मस्त। चलो लिखते हैं, फिर उसके बाद होता है ना, टाइम हो हम्म, जाएगा, टाइम हो गया है ऑलरेडी एक्चुअली। हम्म, लिखते हैं फिर, जितना जितना हो पाएगा उतना लिखेगा फिर, एक ट्राई करेंगे ना। ठीक है। हाँ। 25 मिनट का टाइम लगे। एक मिनट टाइमर लगा देता हूँ। गर्म हो गया। कितना वो टाइम है तेरे हो, पास? मेरे पास 5:30 तक का टाइम है, विच इज हम्म, ऑल्सो पुशिंग। हाँ ठीक है, तो आधे घंटे का ही रखते हैं, छोटी लिखते हैं इस बारी, मतलब मैं छोटा इट तो लिखूंगा। मैं सोच रहा 25 मिनट का रखते हैं ना, अगर उसके बाद आधे घंटा स्ट्रेच हो गया तो हो गया, बट टाइमर थोड़ा कम का रखते हैं। होता है ना, अच्छा। कोशिश करते हैं कि हो हम्म, जाए ताकि बात भी करने को मिल जाए एंड में। हम्म, ठीक है, चल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Start. हम इस पे बना रहे हैं ना, ये अपनी दुनिया में एक ही है, बहुत ही प्रोबेबिलिटी वाली बात है ना। हम्म, हाँ तो तेरे को भाई, मैंने बोला था ना, एक वो लिख, क्या कहते हैं, कैरेक्टर। कैरेक्टर पहले तो उल्टी करूंगा, थोड़ी सी फ्री राइटिंग करता हूँ। फ्री स्टाइलिंग।
हेलो। हेलो। हेलो हेलो। अरे नहीं नहीं, एक मिनट। मैं कुछ वो कर रहा था, टेस्ट कर रहा था। यार लिख तो लिया है बट मजा कम आया है। मेरा भी ऑलमोस्ट हो गया। कैरेक्टर तो मैं लड़ नहीं बना पाया। हम्म, मैंने शुरू कैरेक्टर से करा, बाद में वैसे ही बना। ठीक है। एक मिनट। एक मिनट रुक, मेरे को खत्म कर दे। हम्म, कुछ बोलियो। हेलो 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 हेलो। लर्न बस लर्न बढ़िया लर्न हेलो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व इटसेल्फ। ठीक है। हाँ, तो मैं कहा था, एक मिनट दे, बस दो तीन लाइन लिखनी है। गो। एक मिनट एक मिनट। लेट्स गो।
हाँ भाई हो गया, सुना? हाँ सुना रहा हूँ। एक मिनट इसको ऊपर करने दो, इसको नीचे। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ यार चलो ठीक है। The loop began when consciousness got one desire. सारी कहानियां ऐसे ही शुरू होती है मेरी। हाँ, to let everyone know how amazing it is. And your universe came into existence. As it came, a wave of energy pulsed through the universe and the first motion happened. Everything got charged with this directive to know itself, and the cosmic soup started brewing. The soup was fun. Each and every real and imaginary particle aligned itself to learn its own nature. The universe came into existence as a wave of energy, and out of sheer luck and probability, something happened on Earth. Earth became the headquarters because of sheer chance. Since consciousness got only one shot to ask for, like, for a wish, and then combust into a field of energy, activating everything with its cosmic will. It's like consciousness थी, उसने बोला सबको पता चला मैं कितनी मस्त हूँ, बोल के पड़ गई मैं, ठीक है, और सारे पार्टिकल्स के अंदर वो जो विल है ना वो इम्बाइब हो गई, अब सबको पता चलने का है ना, तो मतलब पार्टिकुलेट हो गई, ठीक है। हाँ it took 4.5 billion years, but now there are humans. They are the first ever sentient vessels after trillions of big and small iterations. A vessel and algorithm which is showing the early signs of a breakthrough. ठीक है, अब लड़की आती है, ठीक है, लड़की Dim Sum was complaining. She woke up grumpy and the hangover hit her like a truck. She hates it. She always wondered why she ever drinks in the first place. She never learns. As she was cribbing about life, each of her ideas and thoughts were being spotted. Each question she thinks, each train of thought, everything is being logged. She has forgotten she is part of a great experiment. So pivotal. She is giving access to train consciousness and close the loop. ठीक है? Her best bet is to gain personal symbiosis and then spread enough scaffolding so that the collective can lift up. But ऐसे बन गया भैंस, बस इतना ही था उसमें, होता है ना लड़की वाला मतलब जो कि वो भी था, मतलब होता है ना कि सिर्फ हाँ बस इतना ही लिख पाया था मैं। उसके बाद था like होता है the purpose of humanity is to help ascend as many humans as possible to understand their true nature, which in return will ascend the collective consciousness. They need to create होता है ना the kind of an environment so that human can ascend and understand the nature. That's the purpose of humanity, and when they ascend, they also input on the collective होता है ना pool, so that होता है ना collective also rises. So है ना, and which in return will ascend the collective consciousness, and when the collective understands its nature, the loop closes. ठीक है, जो starting में loop चालू हुआ था. The design is so amazing, the extraordinary is so well merged in ordinary, and the layers are so juicy, and the game becomes ultimate. Help बस इतना लिखा था. नहीं सही है, बट बीच में मैंने डिमसम लेकर आया था, बट डिमसम का कोई काम नहीं था। मतलब डिमसम के साथ मैं आगे बढ़ नहीं पाया, मैं कॉन्सेप्ट में ही था, मतलब ना दो पैराग्राफ मैंने दिए डिमसम को, होता है ना कि किसी तरह से, बट फिर मुझे समझा नहीं डिमसम का क्या करूं। डिमसम के दिमाग में चला देता है सब। हाँ तो वो मैं सोचा सपने था, में बट दिखा मैं कर दे, नहीं पाया, सपने में इशू था वो। हाँ नहीं कोई बात नहीं, अगली बारी सपने में दिखा दियो कि वो उसको कोई ऐसा लाइट बता रहा है, मतलब जो तूने लिखा है वही बता रहा है उसको, डिमसम को बता रहा है कि वो हैंगओवर से उठी और कह रही कि ये कहाँ पहुंच गई मैं। हाँ, अरे वो जैसे था मेरे दिमाग में वो चल रहा था थोड़ा सा ना, द एग वाली जो स्टोरी थी, एंटीवायर वाली, वैसा कुछ बन सकता था इस पे ना, कि जैसे, बट फिर वही है कि आइडिया ही मतलब होता है ना, चॉक आउट करने में इतना टाइम लग गया, फिर होता है ना। नहीं आज टाइम भी थोड़ा कम था ना यार, आज टाइम भी थोड़ा कम था, 1 घंटा रखते तो अपने आप बन जाता। हाँ 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 आप बताओ आप। तो मैं इसको नाम अगली बार 1 घंटा लिखेंगे। हाँ पिछली बारी भी 1 घंटा लिखा था भाई। एक मिनट पिछली बार कब लिखा था? हाँ
हाँ 1 घंटा लिखा था, सही हाँ था, हाँ सही था, हाँ तब तो सही था। हाँ, हाँ, तभी टाइम लग रहा था। इस बार अभी 1 घंटा होता ना तो मैं इसमें डिम्सुम की कुछ ना कुछ बना देता ये, वही क्योंकि वही चॉक वही आउट हो वही, गया था थोड़ा सा। यस। होता है ना कि बात क्या कहनी है, वो चॉक आउट हो गई थी। बट आइडियाज बढ़िया थे इसमें, मेरे को मजा आया। हाँ हाँ। हाँ, इसका पर इसका अभी तो स्टोरी का मतलब नाम या तो अग्रेशन या वॉर, अभी मैंने मतलब डिसाइड नहीं किया कि क्या कम, थोड़ा मेरे लिए भी कम हाँ, टाइम ही था, बट ठीक है। हाँ बताओ। uh, हाँ, um, alien stands at the precipice of a very chilled out war. This blue and green skinned alien was outnumbered and outgunned. This alien agent is a part of the peacekeepers' mission of the universe. He was being attacked by these other red aliens who didn't know that he was part of the peacekeeping mission. But they knew that he's stopping them from taking over a major route in space. These red aliens with vampire teeth and scaly skin had captured the agent's ship. This agent was now holed up in an inside cabinet of his own ship. One of his helpers looked at him as he injected something in his veins. The helper was confused. Then the agent suddenly became increasingly aggressive and killed every last one of those red, chilled out aliens, to be fair. um, the helper is terrified and he says, "Boss, what the fuck was that?" The help the helper puts their small ship into hyperdrive and they escape. Well, that was the speciality of the most violent species of the universe, said the agent. What? What species, boss? What species are you talking about? How did you get it? Asked the helper. Well, it's a long story, but basically, their species used to live on Alpha 9. They caused a lot of grief to a lot of other alien species. So when our species won, we put them on a spaceship and send them to the deepest, darkest corner of the world, of the universe, while we told others that we killed them off. Why, boss? Why won't you kill such a powerful race? Because they are something no one does. Something known as fear. It makes you ultra powerful for a short time. Wow. How do we get this? Well, we got there, of course. We go there, of course, and extract it without anybody finding out. Okay, that must be hard. Nah, it was super easy, barely an inconvenience. Oh, really? Yeah, yes, because the major space highway we just saved from those red guys, that is the only way to their corner. That's why we call that highway bottleneck. Okay, what are these species called? They call themselves human. So that was aggression या war, whatever देखते हैं क्या. But that was that. थोड़ा थोड़ा समझा, थोड़ा सा बहुत स्लो स्लो बोल रहे थे ना, और तो थोड़ा थोड़ा सा उस वजह से मेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा था, तो काफी बार स्लिप हो गया बीच में. बट मुझे ये समझा, एलियन था, एलियन का एक बच्चा था, वो होता है ना हेल्पर था, वो लोग जा रहे थे हाइपर ड्राइव में लगाता है, फिर कॉन्वर्सेशन करते हैं, मतलब होता है ना वायलेंट स्पीशीज के बारे में,
और उनके बॉटल नेक के बारे में कुछ कुछ बस इतना समझा, बट क्या नहीं था नहीं, वो वो नहीं अटैक हुआ समझा। उन पे अटैक हुआ। मतलब वो हाँ, एक हाईवे को बचा रहे थे, स्पेस हाईवे को बचा रहे थे। उन पे अटैक हुआ रेड एलियंस के द्वारा। रेड एलियंस ने माचोद दी उनकी। वो दोनों ही बचे उस शिप में। छोटी सी शिप थी बट वो दोनों ही बचे अपने उसमें क्रू में। तो पर उसने कुछ इंजेक्ट किया, जो मेन एजेंट, मेन जो शिप चला रहा था, उसने कुछ इंजेक्ट किया अपने हाथ में। और वो गया और सबको मार दिया उसने, रेड वालों को। तो फिर जो हेल्पर था उसने हाइपर ड्राइव में डाला और वो एस्केप कर गए वहां से। और वो रेड वाले सारे मर गए। तो फिर उसने हेल्पर ने पूछा कि तुमने डाला क्या, तुमने ये क्या मारा। तो उसने बोला कुछ तो है बढ़िया, जो मोस्ट वायलेंट स्पीशीज ऑफ अर्थ है, मोस्ट वायलेंट स्पीशीज ऑफ द यूनिवर्स है, उनका कुछ तो एक मेन चीज है। कह रहा अच्छा ये कौन होते हैं। कह रहा कि ये बहुत पहले हमारे यहाँ रहते थे और बहुत बहुत तंग करते थे सबको। तो हमने जब इनको हराया तो हमने सबको बोला कि हमने इसको मार दिया है, बट हमने इनको डीपेस्ट डार्केस्ट कॉर्नर पे भेज दिया यूनिवर्स के, जो ये सिर्फ इस हाईवे से ही जा सकते हैं। तो आ, तो अब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ से उनको अबडक्ट करते हैं, उनसे उनसे इस चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो ये लोग फियर बुलाते हैं इसको। इससे हम अच्छा। बहुत पावरफुल हो जाते हैं। हम्म, और उसके बाद फिर तो वो पूछता है कि अच्छा ये है कौन। तो वो बोलता है कि अपने आप को तो ये ह्यूमन बुलाते हैं। नाइस। तो ये था, तो वो बैक स्टोरी साइड बता रहा था। मतलब एजेंट था, अपने आप को पीस कीपिंग मिशन का बताता है, बट ये लोग इवेंचुअली तो मोनोपोली कर रहे हैं ह्यूमन फियर पे, जो कि एक ड्रग है इन लोगों के लिए, जो कि इनको बहुत पावरफुल नॉट बनाता बैड, बढ़िया। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, है। हाँ। लेयर्ड, बढ़िया। चलो अभी अपन निकलते हैं, मजे आ गए हैं यार। फिर ठीक है we'll ठीक do है ठीक this है। again. चलो ओके ब्रो। Adios, this was fun. Okay, ओ, bye bye. सी यू ब्रो। बाय बाय। So that was another episode of I should name this shit something. Uh, let's just say write with me for now. Right, get inspired and write with me, And we really learned about a theory that maybe we are alone in the universe. We discussed about it, and then we wrote something on that. We had less time because Akshat had to go, but like um, half an hour, we wrote something, and I think it's decent. The language can use some work, but otherwise, it's nice. So yeah, um, whoever's watching this in the future, because nobody's here anyway. Um, yeah, thank you for tuning in, and hope you like and subscribe to my channel. I'll keep making this. New highlights will be on the stream on the channel soon. So thanks for tuning in. Ciao. Check out the highlights and like and subscribe and all that bullshit.